Hello everyone, welcome to Concepts in Chemistry. So in this video, we will be discussing a very conceptual and important question from carbohydrate chemistry. So let's start the discussions without any delay. Yeah, so this questions was asked recently. So in CSI NET exam. So so I already discussed in details about this questions about the answer of these questions. So you will find somewhere the I button. So please click the I button and see the video. We already discussed regarding these questions uh, in a separate video. So ये क्वेश्चंस पूछा गया था जो रिसेंटली सी एस आई नेट 2021 कंडक्ट किया गया. सो वो वाला एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ same questions, relatable questions. So normally this type of uh, reactions we will see in carbohydrate chemistry. So but in this CSI NET exam they just change the starting material, but the concept, the uh, mechanism will be same in case of the questions we are going to discuss now. We will see same mechanism, same properties, same explanation. So regarding these questions answer we will discuss now. We are going to uh, discuss different questions including this step means the first step. इसमें only one reagent means benzaldehyde along with calculated amount of H plus reagent use किया गया to treat this molecule. Now we are going to discuss this questions. So the question is this. Now we are going to discuss. So this will be the very conceptual and very important questions regarding upcoming CSI NET exam. So maybe next NET or GATE or any जो केमिकल साइंस रिलेटेड एग्जाम होता है एमएससी एंट्रेंस और आईआईटी जैम इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है. सो लेट्स start the discussions. So yeah, I intentionally did not put any options because after discussions we will see कितना ऑप्शन हो सकता है ये क्वेश्चन के लिए. So only 4 options you will see in examination hall, but किस तरीके से किस डिफरेंट डिफरेंट वे में 4 ऑप्शन सेट कर सकते हैं एग्जामिनर लोगों ने. सो हम लोग उसके बाद देखेंगे. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द discussion of the detailed discussion of these questions. So let's start. So this is a carbohydrate molecule. So carbohydrate means this is gluco d-glucopyranoside. So this is d-glucopyranoside. So and the first reagent is benzaldehyde along with a catalytic amount of H plus, second lead tetraacetate, and then treated with aqueous acids. So let's see. So these are the some basic discussion. So we have to uh, know this thing before discussion before coming to the main question. So yeah guys, I just ये सब चीज हम लोगों ने वो वाला वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया. सो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो. नाउ आई जस्ट टेक सम टाइम्स स्मॉल टाइम्स टू रिकैपिचुलेट दिस थिंग्स. सो वी ऑल नो दैट 1,3-diol हम लोगों ने 1,3-diol नॉर्मली यूज करते हैं. 1,3-diol प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजाल्डिहाइड, एंड फॉर 1,2-diol normally we use acetone as a protecting agent. So this is the reasons
after protections, benzaldehyde, if we use benzaldehyde for 1,3-diol protections, then this 6-member cyclic structure will form. And if we draw the cyclohexane form, then we can put a phenyl ring at equatorial and hydrogen as axial positions. So this is a stable molecule. Large substituent is at equatorial position. Now if we use acetone for 1,3-diol protections, then there is no options. Uh, in this case, there is no options that axial positions contain a methyl group. So in this case, there is no hydrogen. That's why we have to put a methyl, means large size group, in an axial position. That's why it's stable. So this is the reason. That's why we use benzaldehyde for protection of 1,3-diol. So अगर 1,3-diol किसी कंपाउंड में 1,3 पोजीशन में डायोल है, वो 6 पोजीशन में है, तो ये प्रोटेक्शन जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है. और 1,3 डायोल अगर ट्रांस में है तो तब भी रिएक्शन होता है, बट रिएक्शन स्लो होता है. सो and these are the structure of so if in these positions, that is the anomeric positions, if there is only OH, then we can call them alpha D glucopyranose, means 6-member ring. So this is we draw like a Fisher projections. So please keep in mind that मैंने बहुत बार ये बात बोल चुका है, ये वाला जो पोजीशन है, this is not a CH2 group. We draw like a simple version. So at the last we will see, but we will see that drawing this kind of structure is very helpful to see the actual product. So this is normal planar structure. So if OH is there in the anomeric position, there is methyl alpha D glucopyranose, and if it is OMe, then it is pyranosite. Same thing, methyl beta. So so if this OMe is left side, so it's methyl beta D glucopyranosite. If OH is there, then it will be methyl beta D. It will be only beta D glucopyranose. Pyranose means 6-member ring. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, and oxygen 6. This is not a CH2 group. So ये एक नॉर्मल ड्राइंग है, मतलब हम लोग ऐसे ये वाला लाइन जस्ट दिस इज अ नॉर्मल ड्राइंग. सो प्लीज सी द वीडियो, देन यू विल अंडरस्टूड दैट यू विल, आप लोगों को देखने को मिलेगा वो वाला जो ये वाला कैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज टाइप मॉलिक्यूल को. ये वाला स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है OH ग्रुप को. दिस आर द OH ग्रुप. सो हम लोग एक सिंपल वर्जन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का, प्लीज वो वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस किया. जस्ट फोकस द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. सो in this video we will just we have to focus the answer of the modified question, these questions. So regarding these questions means just using this aldehyde, we discuss the details using this molecule and also using this molecule. Now we added extra 2 reagents to see what will be the product. So अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया, ये 1,3-डायोल हम लोग 1,3-डायोल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजाल्डिहाइड. This is the reason why this is a stable molecule, and these are the structure of cyclohexane form. So alpha D glucopyranosite and beta D glucopyranosite. So we can draw like this OA 1, 2, 3 in different way हम लोग इसको draw कर सकते हैं. So but reaction showing mechanism, this structure will be very helpful. इसलिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म. आप लोगों को शायद थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि हम लोग ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं टू या इन मैकेनिज्म. हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर में मैकेनिज्म हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट्स सी. So see in this alpha D glucopyranosite. So there is one oxygen
group as 2 position. This is carbon 1, this is carbon 2. 2 position on OH group, 3 4. 4 position on OH group means 1 3 positions. 1 3 position में hydroxyl group है and these two hydroxyl group are in cis manner. Again 1 2 3 4 positions and 5 6 positions. 6 position में भी 2 hydroxyl group है, 4 5 6 4 and 6 positions. तो इसमें 2 equivalent of 1 3 diol present है, means 1 and 2 and 4 position में 1 equivalent of 1 3 diol and 4 and 6 position में 1 equivalent of 1 3 diol. So आप क्वेश्चन ये होगा बेंजाल्डिहाइड किसके साथ ऐड करेगा, कौन सा, ये 2 4 1 3 डाइऑल और 4 6 1 3 डाइऑल. ये है क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन. बेंजाल्डिहाइड अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये किसके साथ ऐड करेगा, अगर हम लोग बेंजाल्डिहाइड 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं. सो नॉर्मली एक पॉइंट प्लीज नोट करिएगा, अगर सिस 1 3 डाइवल है तो रिएक्शन फास्टर होता है, ट्रांस 1 3 डाइवल होता है सो रिएक्शन होता है बट थोड़ा रिएक्शन रेट बहुत कम होता है. सो लेट्स सी दिस आर द corresponding structure of this glucopyranoside. So we can write any of this form and this is for beta. So see, this is anomeric means OMe, this is anomeric means this is OMe carbon, this is carbon 2. See 2 3 4 2 and 4 में 1 3 डाइवल है जो 6 पोजीशन में है and 4 5 6. This if we draw the actual structure then we can see this OH and this CH2OH, this carbon is trans to this OH group. So let's see the actual mechanism or actual structure of the product. So this is 1 2 3 4 5 6. So if we use pH benzaldehyde and presence of catalytic amount of H plus, then there are two possibility. If 2 4 which are in 6 positions 2 4 1 3 diol, then we will get this kind of product. कार्बन 3 में जो OH है वो above the plane है, so it is in equatorial, this also equatorial, this also equatorial. So now see the product, stability of the product. If benzaldehyde react with this 2 4 on 3 diol, then this kind of product. See this is a cyclohexane and see this 6 member ring, this is a newly formed 6 member ring. So this is a strange 6 member ring. जो पहले 6 member ring था mother, this in reactant this 6 member ring is that, and after reacting with 2 4 1 3 diol benzaldehyde form a new 6 member ring. This is this one new 6 member ring and see this is a strange 6 member ring. So this is not a stable 6 member. So due to this kind of unstable 6 member ring, this whole molecule is suffering from some strain. So this is not a stable molecule. Now see, if this 4 OH and 5 6, this carbon, this orientation is trans to this OH, but see this OH not is completely trans to the OH. Only this C bond is trans. Now this is a tetrahedral structure, means sp3 carbon. So this OH is somewhat closer to this OH. This OH and this 4 OH are not completely trans to each other like 3 and 4. 4 is below and 3 is above, but in 4 OH below, but this 5 6 this carbon is up, but this OH is somewhat closer to this OH. This is not completely trans and completely cis with this 4 and 6 OH group. The carbon 4 and carbon 6 OH group are 1 3 diol, but they are not completely trans or completely cis. See, if this 4 and 6 OH group take part in the
reaction, then what will be the product? See, this is 1 2 3 4 5 see 6 OH, 6 OH and 4 OH. If OH group at 4 and 6 positions react with benzaldehyde, then they will form a stable molecule. See, just like a chair rests uh, above the another chair. So this is a chair of reactant, and see the newly formed chair. This is the newly formed chair formed in this product. See, also the pH ring, also the pH means phenyl ring is also at equatorial positions. So there is a axial equatorial position, but in this case there is no such kind of thing. So this whole 6-member newly formed ring is suffering from highly strain, and that makes the whole molecule unstable. But in this case, see, लग रहा है एक साइक्लोहेक्सेन चेयर, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन चेयर ऑफ द रिएक्टेंट, जस्ट लग रहा है और एक साइक्लोहेक्सेन चेयर उसके ऊपर सो विदाउट एनी स्ट्रेन जस्ट उसके ऊपर बैठा है, ऐसा लग रहा है देखने में. जस्ट another 6-member ring rest on the other 6-member ring. So this is a stable molecule. This is a highly stable molecule. So if 4 and 6 OH group take part in these reactions with benzaldehyde, then we will get a stable molecule. So, and if 2 4 which are in already 6 OH group in 1 3 diol positions, if they take part in these reactions, then we will get a highly unstable molecule. So though 2 and 4 OH group are in cis manner, but 4 and 6 are not completely cis or completely trans, still in this case 4 OH and 6 OH take part in the reactions to form a stable molecule, like a newly chair rest जस्ट लग रहा है जे ये न्यूली फॉर्म जो चेयर है वो और एक चेयर के ऊपर आराम से बैठा है, ऐसा कुछ लग रहा है. सो दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. सो वी कैन नाउ ड्रॉ दिस मॉलिक्यूल लाइक दैट. सो if we consider this molecule and after a product, if we can draw in normal planar form without drawing cyclohexane, then see these 2 and 4, this will not react with benzaldehyde. 4 and 6 positions will react with benzaldehyde, and also we have to mention the stoichiochemistry of phenyl ring. Also we have to mention the stoichiochemistry of phenyl ring. See, in this case the phenyl ring is equatorial, means it is below. So जो क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट में, उसमें भी आंसर में फिनाइल नॉट जस्ट फॉर दिस स्टोइचोकेमिस्ट्री, उसमें पीएच जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी स्टोइचोकेमिस्ट्री मेंशन करना था. वो बिलो था और अप था, उस स्टोइचोकेमिस्ट्री ये वाला कार्बन का भी मेंशन करना था वो वाला क्वेश्चन में. सो द केमिस्ट्री इज लाइक दैट. 2 4 are in cis positions, but still if this 2 and 4 OH group react with benzaldehyde, we will get a highly unstable molecule. If 4 and 6 react, we will get a stable molecule. Though 4 and 6 are not completely cis to each other or completely trans to each other. So in this case 4 and 6 OH group which are in 1,3-diol react with benzaldehyde to form a stable molecule. This is the stable molecule. So yeah, सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट जो लास्ट CSIR नेट एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें पूछा गया था. तो सी 1 3 1 2 3 1 2 3. सो इसमें 3 इक्विवेलेंट, वी कैन से 3 इक्विवेलेंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ 1,3-diol है. वन है 1 2 3, these are completely trans to each other. 1 2 3, these are also cis, and this 2 2 dash, so you can mark this carbon as a 2 dash. So 3 2 2 dash, these are also a 1,3-diol. So 1 and 3 OH are completely trans to each other, and in between this CH2 OH group is there. So these 1 3 diol which are in completely trans cannot take part in these reactions.
but possibility is 1 to 2 dash. If we mark this carbon as 2 dash, 1 to 2 dash react कर सकता है, और 3 to 2 dash react कर सकता है. So दिस आर, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत किया, क्योंकि उन लोगों को लगा पहले ये 1 to 1 ये वाला OH 2 डैश में दोनों सीज में है, तो यही रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट सीज मिलेगा. बट आंसर, इसका आंसर डिफरेंट था. सो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया. जस्ट थोड़ा मैं उसका रिकैपिचुलेट करना चाहता हूँ. सो सी, this is the cyclohexane form. This is OH 1, 2 CH2OH 3 below. So if 1 to 2 dash take part, means 1 to 2 dash, this OH and this OH take part in this reaction. See again a strange 6-member ring. Again a strange 6-member ring we will get, and this strange 6-member ring make the whole molecule unstable. Now if 3 to 2 dash, if 3 and 2 dash OH take part, similar OA में हम लोगों को एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिलेगा, जो लग रहा है एक चेयर, एक परफेक्ट चेयर रेस्ट ऑन another chair. So and obviously this phenyl ring also should be rest in a equatorial position of the second newly formed chair structure. So this is stable molecule. So that's why in this case also 2 2 dash and 3, this 1 3 diol take part in this reactions, not this 1 2 or 2 dash. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन. बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर में पूछा गया था. नॉर्मली हम लोग जो लैब में रिएक्शन हम लोग जो करते हैं प्रैक्टिकल में करना पड़ता है, जिन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, सो दे विल डू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कोई पार्टिकुलर एक और दो OH को उन लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं. सो इसलिए कुछ केस में 1 2 डाइऑल और 1 3 डाइऑल को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस यूज्ड टू डू इन लैब. कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट लोगों ने ये इस टाइप का रिएक्शन नॉर्मली लैब में करते हैं. सो ये था एक्चुअल केमिस्ट्री बिहाइंड दिस. सो जो नेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा था, एक सिंपल स्ट्रक्चर, बट हम लोगों ने जो एक्चुअल होता है कार्बोहाइड्रेट लेके एक क्वेश्चन दिखाया. सो इतना हम लोगों ने पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर लिया. नाउ सीधा मॉडिफाइड क्वेश्चन. सो हम लोगों को ये वाला रिएक्शन के बाद ये वाला प्रोडक्ट मिला, नॉट जस्ट दिस OH and OH 1 and 3 OH. सो 2 and 4 OH इसमें रिएक्शन टेक पार्ट नहीं किया. 4 and the OH present in 6 carbon ये वाला रिएक्शन में टेक पार्ट किया. सो अब आफ्टर reacting with benzaldehyde in place of catalytic H+, taking this reaction, हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला. नाउ ये वाला प्रोडक्ट में हम लोग और 2 रिएजेंट यूज करेंगे टू सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स. So this is the glucopyranoside. So after treating with benzaldehyde and catalytic amount of H+, we will get this kind of product. We have to mention, please keep in mind, we have to mention the stoichiometry of this carbon also. In this carbon, see the phenyl ring, or you can say here the phenyl ring is in the equatorial position, means phenyl ring should be below. So या जो क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, उसमें फिनाइल रिंग का भी स्टोइकियोमेट्री पूछा गया था, और ये वाला दोनों का कौन सा OH कौन सा 1 3 OH टेक पार्ट करेंगे. मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया, मैक्सिमम मोर देन 80% और 90%, जस्ट ये सोच के कि सीज में है इसलिए सीज वाला रिएक्ट करेंगे. बट वो केस उतना सिंपल नहीं था. सो नाउ हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला. सो इफ वी ट्रीट विद लेड टेट्राएसिटेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देन वी ऑल नो दैट लेड टेट्राएसिटेट did oxidative cleavage reactions, means if there is 1 3 diol, then it will oxidize with cleavage, means this bond will break and form a
dialdehyde. So in this step we are using late tetraacetate. Here trans 1,2-diol present. So this trans 1,2-diol undergo oxidative cleavage to form dialdehyde. We will get this kind of product. So if we use aqueous acid, now this protected uh, functions become deprotected to release the OH functionality, and also this uh, this hemiketal also break down to form a carbonyl compound like in this way. First this OMe and this OH become protonated, then water will attack this Me, this OH group become free, and now this OH bond break and this bond also break to. सो हम लोगों को उसके लास्ट में ये वाला ऐसा कुछ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद CHO मिलेगा. सो ये वाला प्रोडक्ट हमको मिला जस्ट टू ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट. केमिस्ट्री इसमें ही था, बाकी जो रिएजेंट वो नॉर्मल यूज है वो हम लोग सभी को पता है. बट ये बेंजाल्डिहाइड अगर इसमें 1 2 3 ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ 1 3 डाइवल प्रेजेंट है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. जो 4 and 6 पोजीशन में वो है जो एटलीस्ट 1 3 डाइवल बट नॉट इन कम्प्लीटली ट्रांस एंड नॉट इन कम्प्लीटली सिस, वो टेक पार्ट करेगा रिएक्शन में ताकि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. ये मिलने के बाद जस्ट नॉर्मल ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देन एक्वा एसिड ट्रीटमेंट. एट लास्ट हम लोगों को एरिथ्रोस एंड डायक्सल मिला. सो अभी मैं बोल रहा हूँ ओके. Before that, I just want to show the mechanism of this. So we all know that late tetraacetate, see late tetraacetate कैसे react करता है. We all know that if there is cis-diol, then the reaction होता है in via concerted mechanism. Means like this, two ways attack this group and two ways depart from this late tetraacetate. Now via concerted mechanism, this bond will break, and this bond also break to form two equivalent of carbon compound along with late tetraacetate, late diacetate. So PB always +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करते हैं. हम लोगों ने पता है क्योंकि वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए PB ट्रांसफर PB पहले ये ऑक्सीडेशन 4 था, आफ्टर दैट वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया. इट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेट. So if there is trans diol 1,2-diol, then see how the reaction proceeds. So in this it is concerted mechanism, but in this case the mechanism will be stepwise. So first one OH attack, one OAC leaves, then another OAC abstract this proton, this bond will break, and so on to get two equivalent of carbon compound along with lead diacetate. So in this case normally cyclic 5-member ring फॉर्म होने का चांस नहीं होता है क्योंकि ये 1,2-डाइवल ट्रांस में है. इसलिए इन दिस केस जो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म में होता है साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होने का चांस इसमें नहीं होगा. इसमें साइक्लिक 5-member रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक 5-member रिंग फॉर्म नहीं होगा बिकॉज दिस OH आर ट्रांस टू ईच अदर. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ टू late tetraacetate did oxidative cleavage for 1,2-diol cis and trans. Obviously in cis केस में रिएक्शन फास्टर होता है और ट्रांस केस में रिएक्शन रेट थोड़ा कम होता है. So this is the mechanism how late tetraacetate do oxidative cleavage in 1,2-diol. Now come to this point, हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला. So we obtain this erythrose and dioxazole. This CHO, this compound name is dioxazole. तो सी हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला विथ स्टोरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा. सो नाउ इफ वी treat some stereochemical treatment, see we draw this like this structure, and at last we obtain this kind of molecule. Then we all know that carbohydrate molecule, the most oxidized part should be at top and the least oxidized part should be below. So we just rotate 190 degree this compound, we will get erythrose. बट मैंने वो
I told already that yeah, before starting the video that हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है प्लानर और दिस काइंड ऑफ just not writing again and again OS group OS, we just put a line like that. ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक फायदा है, जो हम लोग मैकेनिज्म करते हैं उसमें उतना डिफिकल्टीज नहीं आता है हिस्टोकेमिस्ट्री मेंशन करने, हिस्टोकेमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए which side this OS should be raised, left side or right side, up or below. See, I will show you. If we now हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर लिया एंड वी showed the mechanism taking this structure. Now see, if we take this structure, just simple, these are same structure, the simple structure of this glucopyranoside, then see the mechanism कितना simple होता है. See, this is the product after protection. See, these OAs and these OAs are in different side mean trans. So trans means yeah, these are trans. So 1,2-diol. So late tetraacetate oxidative cleavage will happen, means this bond will break and here one aldehyde group will be there. So CHO will be there. Now see, if we use aqueous acid, see, there is no change in histochemistry, that just bond breaking. This bond break to form two aldehyde group. If we use aqueous acid, this hemiketal, or you can say this is hemiacetal, this kind of moiety after treating with aqueous acid, so the protected functionality become deprotected, so this become free OAs, this also become free OAs, and there two carbonyl group is present, aldehyde. Now in presence of aqueous acids, this OAs, this bond, I can show you that this bond will break like that, like similar way. See, this bond will break and this bond will open. Same thing, this bond will break and this bond will open to form dioxide and see directly एथ्रोस. हम लोगों को कुछ हिस्टोकेमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, जस्ट हम लोगों को एथ्रोस मिल गया. इफ वी शो मैकेनिज्म अपॉन दिस स्ट्रक्चर, सी, हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला, पता नहीं था ये कौन सा, एरिथ्रोस है, ये थ्रेओस है और बाकी बहुत कुछ है इसमें. मतलब एट फर्स्ट इंप्रेशन ये वाला प्रोडक्ट देख के आपको, अगर ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्शन में है तो ठीक है, आप लोग कर लोगे, बट ये वाला ऑप्शन प्रोडक्ट मिले हम लोगों को मिला आफ्टर ट्रीटिंग, बट ऑप्शन में नाम दिया हुआ है कंपाउंड का, ग्लाइऑक्साल और बाकी जो होता है बहुत सारा नाम ग्लाइऑक्साल, एरिथ्रोस और थ्रेओस. सो अगर ये है तो बहुत मुश्किल होगा. सी, यार हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया 1 2 3 4 ट्रीटमेंट टू सी व्हाट it is actual erythros or threos or other any carbohydrate molecule. But if we show the mechanism in this simple structure, simple version of the pyranoside, then there is we need no histochemical treatment. Directly this see, we are obtaining erythros along with glyoxal. So इसलिए मैंने first just starting the video I will mention that I intentionally मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन बहुत हो सकता है. क्वेश्चन में ऑप्शन हो सकता है, अगर ये बेंजाल्डिहाइड, टेट्राएसिटेट एंड एक्वा एसिड ट्रीट करने के बाद हम लोगों को टू प्रोडक्ट मिला, सो ऑप्शन में हो सकता है ग्लाइऑक्साल, एरिथ्रोस, ग्लाइऑक्साल, थ्रेओस, बाकी इसमें ग्लाइऑक्साल नहीं होता है. अगर ये वाला स्ट्रक्चर को चेंज करके दे सकते हैं चार ऑप्शन में, इसमें एरिथ्रोस भी पूछ सकते हैं, थ्रेओस भी पूछ सकते हैं, और एक हो सकता है जस्ट they will give you the this kind of structure. I think ये भी हो सकता है, we obtain two products, one is glyoxal and the other one अगर उन लोगों ने 4 different type of इस टाइप का mentioning histochemistry also, अगर 4 type different option पूछते हैं, सो
along with glyazole, दे अगर उन लोगों ने मेंशन किया हम लोगों को ये वाला रिएक्शन के बाद glyazole मिलता है जो CHO होता है फॉर्मूला, along with one कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर ये वाला ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज होता है, ये वाला बिलो, ये वाला आप होगा, ये वाला आप, ये वाला बिलो होगा, सो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑप्शन, चार ऑप्शन होता है क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप ऑप्शन वो लोग पूछते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है ये वाला रिएक्शन के बाद हम लोगों को एक एथ्रोज मीन्स एक टेट्रोज मिला, उस टेट्रोज के साथ और एक कंपाउंड मिला, उसका नाम क्या होगा, ग्लाइऑक्सल और बहुत सारा नाम अगर उन लोगों ने मेंशन करते हैं। सो हम लोगों को दोनों ही याद रखना है, एक है एरिथ्रोज एंड और एक ग्लाइऑक्सल। CHO is called glyazole, and this is at first impression by seeing this you cannot say this is a ethos molecule. You have to treat this chemical treatment to see actually it is ethos. But if you draw mechanism in this structure in every reactions, then you will automatically obtain the actual structure with stoichiochemistry. आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स वाई आप लोग ट्राई करिएगा ये वाला कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो रिएक्शन होगा ये वाला स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए। ये वाला स्ट्रक्चर में अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा टू ऑब्टेन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट, whether it is erythros kind of or threos kind of or which is right side और लेफ्ट साइड आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। सो ट्राई करिएगा, अगर रिएक्शन दिया हुआ है सो ये वाला इस टाइप का स्ट्रक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए। सो देयर आर 4 स्ट्रक्चर आई ड्रॉ हियर। दिस इज आल्सो वी कैन ड्रॉ, दिस इज साइक्लोहेक्सेन फॉर्म, दिस इज आल्सो अ प्लानर। सो कुछ केस में या हम लोगों ने यहाँ साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ किया टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। बट सी इन दिस केस if we draw this kind of structure then we will be facing some problem regarding the stoichiometry of the product, and हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा इसका एक्चुअल नाम और what is this actual product, either it is it is 1 2 3 4 carbon means tetrose, whether it is erythros, threos or other, I don't know. But if you draw this kind of structure, see this is a simple mechanism and you will automatically obtain glyazole along with erythros. So yeah, that's all for today. और एक क्वेश्चन जो गेट में पूछा गया था वो वाला सेम रिएक्शन है, वो ग्लूकोज के साथ अगर हम लोग एसीटोन एक से एसीटोन रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कौन सा होता है। सो वो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इन केमिस्ट्री काउंसिल पूछा सीरीज में। और बाकी जो ये था ये दो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड आप लोगों को आप सभी को ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आया। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड stay safe, stay healthy. That's all for today. Bye.